या इमामे ज़माना, या इमामे ज़माना, कुल वसाते वालियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरन व दलीलन व ऐनन। आपके बगैर जाए हम कहाँ, है जमीन तंग दूर आसमां, तेज तर हुई गम की आंधियां, किसको दे अब सदा हुज्जत खुदा, या इमाम, या इमाम। कुल वसाते वालियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरन व दलीलन व ऐनन। है ज़हूर में देर किस लिए, मुंतज़िर है हम कब से आपके, बुझ रहे हैं अब आस के दिए, आ भी जाइए जरा, जिंदगी है अब सजा, या इमाम, या इमाम। अली मदद, या अली मदद, कहते रहेंगे दिल से सदा, या अली मदद, या अली मदद। हर एक नबी के वक़्त खुशाया अली मदद, या अली मदद। कहते रहेंगे दिल से सदा, या अली मदद, या अली मदद। हल्लाल मुश्किलात हो सारे ज़माने में, सारे जहान को हल्लाल मुश्किलात हो सारे जहान को, सारे जहान को ठोकर लगी तो दिल ने कहा, या अली मदद। नारे हैदरी, नारे जियो जियो हैदरी। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ठोकर लगी तो दिल ने कहा, या अली मदद, या अली मदद। कहते रहेंगे दिल से सदा, या अली मदद, या अली मदद। मुश्किल पे भी अगर कोई मुश्किल जो पड़ी, मुश्किल जो पड़ी, मुश्किल पे भी अगर कोई मुश्किल जो आ पड़ी, मुश्किल जो आ पड़ी, तो मुश्किल ने मुश्किलों से कहा, या अली मदद, या अली मदद। कहते रहेंगे दिल से सदा, या अली मदद, या अली मदद। खुद सारी उम्र शेख मुखालिफ रहा मगर, मुखालिफ रहा मगर। हसन इब्न अब्दुल्ला इब्न सैयदना मौलाना अबुल फजल अब्बास इब्न अमीर al-मोमिनीन, quatrième génération Hazrat Abbas na औलाद માં એકદમ આપણે પોતાને કેટલા જણાને ખબર નહીં હોય કે હઝરત અબ્બાસ પાસે औलाद હતી કે નહોતી. તો આ પ્રયોગ છે કે હઝરત અબ્બાસ પાસે औलाद હતી, એમાંથી શાહ સૈયદ અલી ઇબ્ન અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ઇબ્ન અમીર al-મોમિનીન. તમે એમ રીત નાખો કે તમે કરબલા બેસા છો એ હરમમાં, એ મૌલા પાસે કે જેને જ્યારે જમીન ઉપર પહેરા તો બાજુ વગર, એ મૌલા પાસે કે જેનો હદફ, જેનો બીટ, જેનો મકસદ બસ બચાવવા માટે પાણી લેવાનું. એ મૌલા પાસે કે જેને તેના ઇમામને, તેના ભાઈને કોઈ દી ભાઈ કરીને નહોતા બોલા, બસ મૌલા કરીને બોલાવતા હતા.
કેવી રીતને ઝૈનબને થયું હશે, કેવી રીતના જનાબે ઝૈનબને થયું હશે ત્યારે જોઈ છે આશુરની રાતના ખૈમાઓ બળી રહ્યા છે, સામે ગરીબામાં ખૈમાઓ બળી રહ્યા છે, પણ એના મોડથી હું આવું આશુરની રાતના ઇમામ હુસૈન જનાબે ઝૈનબને બોલાવે છે કે યા ઝૈનબ આજથી આપણે કામ પાડતાશે કરે, સાંભળજો, આજથી આપણે કામ પાડતાશે કરે. ઝૈનબ કાલથી યતીમોને રાખું તારું કામ છે, લાશોને ઉપાડું મારું કામ છે. આવી ગયા છે એ મસ્જિદ જે આપણા મૌલા આપણા યુસુફ, તમે વિચાર કરો યાવાશ કરો, જનાબે યાકૂબે, સાંભળજો, જનાબે યાકૂબે જનાબે યુસુફ માટે એકલું રોયા હતા કે તેની આંખ હાઈલી ગઈ હતી. જનાબે યાકૂબે જનાબે યુસુફ માટે એકલું રોયા હતા, તેની આંખ હાઈલી ગઈ હતી. તો યા મૌલા શા માટે મારા યુસુફ માટે મને એક આંસુ નથી આવતું? યાકૂબે આંખ દે દીધી તેના યુસુફ માટે. મૌલા ઈમાન, યા મૌલા યા ઇમામ ઝમાન, શા માટે તમારી મોહબ્બતમાં મારા આંખોમાં આંસુ નથી આવતા? સાથે મળીને હાથ માથા ઉપર, યા ઇમામ ઝમાન, અલ્લાહુમ્મા કુલ લિવલિયકા الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ساتي مريم لبيك يا إمام، لبيك يا إمام، لبيك يا إمام، لبيك يا إمام. الأجل الأجل يا إمام زمان، 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 الأجل الأجل يا إمام زمان. لبيك يا إمام، لبيك يا إمام، الأجل الأجل يا إمام زمان، الأجل الأجل يا إمام زمان، الأجل الأجل يا إمام زمان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. तारा मत फिदा या इमाम, फिदा जानो दिल से है हम तुम पे मौला, है हादी उमदी, है हादी उमदी, इमाम ज़माना. फिदा जानो दिल से है हम तुम पे मौला, फिदा जानो दिल से है हम तुम पे मौला. है हादी उमदी, है हादी उमदी, इमाम ज़माना फिदा जानो दिल से है हम तुम पे मौला, फिदा जानो दिल से है हम तुम पे मौला. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن
वलीज कल हुज्जत इब्नुल हसनी सलावातुका अलैहि वाला बाही फी हाज़ि साती व फी कुल्ले साती वलियों व हाफिज़ों व क़ाइदों व नासिर व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवान व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या इमामे ज़माना या इमामे ज़माना कुल वसाते वालियों व हाफिज़ों व क़ाइदों व नासिरन व दलीलन व ऐनन। आपके बगैर जाए हम कहाँ, है जमीन तंग दूर आसमां, तेज तर हुई गम की आंधियां, किसको दे अब सदा हुज्जत खुदा या इमाम या इमाम। कुल वसाते वालियों व हाफिज़ों व क़ाइदों व नासिरन व दलीलन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। બધાનો લાખ લાખ શુકર આપણે આપણી છેલ્લી મંઝિલમાં જે આજે અતરાફનો પ્રોગ્રામ હતો જમકરાન મંગળવારની રાત થઈ મને આખા દુનિયાથી ફોન આવે કે જો તું જમકરાન જા તો અમને દુઆમાં ના ભૂલજે। આખા દુનિયાથી કોસ્ટારિકાથી બ્રાઝિલથી પેરુથી બહુ જાજી જગ્યાથી શા માટે? કારણ કે બધાને યકીન છે કે આ ઇમામના ઓર્ડરમાંથી બનાની છે। ઇમામે કીધું છે કે અહીંયા તમે મારા માટે મસ્જિદ બનાવો। હું વધારે લંબાવતો નથી કારણ કે હમણાં નમાઝ નીકળતા છે, બે નમાઝ કરવાની છે આપણા પાસે જે અડધી કલાક છે અડધી 45 મિનિટ છે આપણા પાસે નમાઝે મગરીબ બેન મોર બે અમાલ બે નમાઝ પડવાની છે અહીંયા। पहली नमाज जी है तैयते मस्जिदनी रेस्पेनी तैयते मस्जिदनी रेस्पेनी तैयते मस्जिदनी रेस्पेनी केवी रीतना पढ़वानी है नमाज? सूरे हमद पछी 7 वखत कुलो ओलाद 7 फुआ कुलो ओलाद सूरे हमद पछी 7 फुआ कुलो ओलाद। रुकू में तमे चारे जाओ 7 वक्त पढ़वानुं छे। सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे 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 7 वक्त तेनु जिक्र पढ़वानुं छे। Before répéter 7 fois le zikr सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे ये इतना 7 वक्त। तमे सजदा में जाओ बे सजदा तमे करो तो 7 वक्त पढ़वानुं छे। सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे। बीजा सजदो पण एवी रीतना ज बीजी रकात पण एवी रीतना ज सूरे हमद पछी 7 वक्त कुल औलाद रब्बना પછી રૂકુમાં તમે જ્યારે આવો ત્યારે 7 વખત તમે પઢવાનું છે। 7 વખત રૂકુમાં સુબહાન રબ્બિલ અઝીમ વ બિહમ્દે, સજદામાં તમે જાઓ તો 7 વખત પઢવાનું છે। એ પહેલી નમાઝ। પાછું રિપીટ કરું છું, નમાઝ તૈયતે મસ્જિદની રેસ્પેની નિયત કંઈ ઓબ્લિજે નથી અરબિકમાં તમે કહો મસ્જિદની રેસ્પેની નમાઝ 2 રકાત સુન્નત કુરબતન ઇલલ્લાહ। કેવી રીતના પઢવાની છે? સૂરે હમ્દ પછી 7 વખત કુલ औलाद। રૂકુમાં તમે જ્યારે જાઓ 7 વખત પઢવાનું છે। સજદામાં તમે જાઓ 7 વખત પઢવાનું છે। 7 વખત કરવાનું નથી, પઢવાનું છે। ઓકે, એ પહેલી નમાઝ। બીજી નમાઝ જે છે આમાલ ઇમામે ઝમાનની કેટલા તમે નસીબદાર છો કે તમને મંગળવાર રાત મેલી આમાલ ઇમામે ઝમાનની। બોલી મોહમ્મદ ભાઈ
તમે વલીમાં તમે આવ્યા હતા મંગળવાર રાતે કાફલો 85%નો આ લોકોને નહોતું મળ્યું આ નસીબ કેટલા નસીબદાર છો કે તમે મંગળવાર રાત કઈ વળી આઈના રજબિયોનની રાત જેટલા રજબમાં આવ્યા છે એ બે કઈ રાત ઇમામ અલીઉન નકીની શહાદતની રાત કઈ રાત કાલે આપણે મશહદુર રેઝા જઈ રહ્યા ચાર ફજીલત એવી રાત તમને મળી રહી છે આમાલી ઇમામે ઝમાનની 2 રકાત છે સૂરે હમદમાં ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન તમે તસબીહ સૂરે હમદમાં જ્યારે તમે પઢો બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન અરરહમાનિર રહીમ માલિકી યૌમિદ્દીન ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન અમે તારી જ ખુદાની ઇબાદત કરી રહ્યા છીએ તારા સિવાય બીજું કોઈ નથી અમારી પાસે ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન 100 વખત એટલે એક તસબીહ જેટલી વખત પરાય મારાથી 100 વખત નથી થતું 3 વખત થાય છે 10 વખત થાય છે 20 વખત થાય છે 100 વખત પરવાનું છે પણ જેટલી વખત પરાય ભૂલી ના જજો કમિયત અને કૈફિયત Bétari, c'est que tu mets 100 fois par an. Yaka Nabdo, Yaka Nestein seulement. Après, vous continuez. ઈયાકા ના Oui, oui. Fakat Yaka Nabdo, Yaka Nestein, après, vous continuez le suro. ના ના continue કરું દો Oui, oui. યાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન જેટલી વખત પરે 100 વખત પરવાનું છે પછી સૂરાને તમે પતાવી નાખો કુલોલાત એક જ વખત રૂકુ અને સજદામાં તમે જાઓ રૂકુ અને સજદામાં તમે જાઓ જેમ પહેલી નમાઝમાં તમે પૈરા ને સજદા એવી રીતના રૂકુ અને સજદામાં તમે જાઓ જેમ પહેલી રકાતના તમે પૈરા ને એવી રીતના બીજી રકાત પણ એવી રીતના જ સૂરે હમદમાં તમે આવો અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન અરરહમાનિર રહીમ માલિક યૌમિદ્દીન ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન ઈયાકા નઅબુદુ વ ઈયાકા નસ્તઈન 100 વખત પછી સૂરાને પતાવી નાખો કુલોલાત એક જ વખત એ બે નમાઝ એ બે રકાત થઈ જાય પછી સજદામાં 100 વખત સલવાત છે જેટલી વખત પરાય 100 વખત પરવાનું છે 200 વખત પરાય તો 200 વખત કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી 100 વખત સલવાત છે એક તસબીહ સજદાની હાલતમાં બે નમાઝ પરાઈ જાય પછી સલ્વાલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Cher frère, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je m'appelle Nadir Daya. Mon père, Azad Ali Daya. Ma mère, Minaz Merali Diva. Vous êtes de quel pays? De France. De France. Machallah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous connaissent déjà, mais je vous ai posé quand même la question. On vous a déjà vu souvent dans les concours de pétanque, tel que vous connaissez que Nadir Daya est un bon tireur, et tout le monde le connaît dans le milieu de pétanque. Par contre, ma question, cher Nadir Daya, vous êtes ici en tant qu'étudiant, je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça exactement. Ça fait 3 mois que je suis là, à peu près 3 mois. Je suis en ce moment en train d'étudier la langue farsi. Et Inch'Allah, après, pour continuer dans cette langue, Inch'Allah. Machallah. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement en fait? Beaucoup de choses m'ont motivé, mais ce qui m'a vraiment fait décider de venir ici, c'est le voyage qu'on a fait cet été, grâce à la participation de mes filles Zainab, qui a pu, alhamdoulilah, soutenir la moitié des frais du voyage sans lesquels je n'aurais pas pu profiter de ce voyage. Machallah. Donc c'est vraiment ce crèche, les cours qui ont été dispensés dans ce crèche, la visite, le haram de Bibi Fatima Masouma. Salamullahi alayhi. Machallah. Et quelles sont vos motivations en fait? Parce qu'il faut être vraiment motivé pour venir étudier, de quitter Paris. En fait, vous quittez un autre monde pour venir Dans un autre monde. En fait. Hein? Mais Inch'Allah, après ce monde-là, on ira dans un autre monde, Inch'Allah. Et c'est pour mieux préparer l'autre monde, Inch'Allah. Machallah. Et vous commencez à parler farsi un petit peu ou bien c'est difficile? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Et au niveau des cours, vous pouvez nous expliquer un petit peu quels cours vous faites, quels sont... Alors, pour apprendre le farsi, il y a 6 livres. 6 livres, donc à peu près 1 mois par livre. À peu près, les cours sont dispensés le matin. Ensuite, l'après-midi, il y a 1 heure de Moubaesso. Moubaesso, c'est les élèves qui essayent de réviser entre eux. Ça permet de communiquer. C'est bien parce qu'on apprend une langue en communiquant, en parlant.
Donc c'est bien, si on n'a pas compris des points, c'est les élèves même qui expliquent. C'est un bon système, alhamdoulilah. Pouvez-vous nous dire combien d'élèves vous êtes dans votre Hawza? Dans le Hawza, on est à peu près 250 élèves, dont 109 nationalités, à peu près. Et il y a pas mal d'élèves qui parlent français dans votre groupe? On est une dizaine de Français. Une dizaine seulement? Une dizaine, 10, 12, dont 7 Hawza, machallah. Machallah, c'est très bien. Donc, une autre question. En fait, quand vous êtes arrivé en Iran pour le crèche, et quand vous avez fait les cours et tout ça, qu'est-ce qui vous a motivé le plus en fait? Il y avait une matière spécifique ou quelque chose comme ça qui vous a motivé? C'était le cours de Cheikh Nadir Jafar. C'était un cours de akhlaq, d'éthique, mais on parlait de beaucoup de choses. Et c'est un très grand monsieur qui parlait aussi de philosophie. C'est une matière très intéressante. Machallah. Sinon, pour ceux qui sont à Paris, à Madagascar, La Réunion, et pour ceux qui nous regardent actuellement, les jeunes surtout, quel message vous aimeriez passer à ces jeunes-là pour leur motiver par exemple? Avant de venir ici, j'ai fait beaucoup de recherches dans beaucoup de domaines et dans la religion. Dans l'islam, il y a beaucoup de branches, sunnites, chiites, wahhabites, énormément de branches. Alhamdulillah, mes recherches ont eu pour conclusion que on est dans la bonne voie, Inch'Allah. Et cette voie, il ne faut pas la lâcher. Il ne faut pas se détourner de nos traditions, de la tradition de notre Rasoul, que malheureusement on laisse souvent de côté. Inch'Allah, ça va changer. Inch'Allah, Ilahi. En tout cas, Nadir Bhai, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Il est actuellement 1h20 du matin et je vous dérange pour ce reportage, pour ce petit interview. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Et on prie pour vous que, Inch'Allah, Ma Fatima Touzara Salamullah alayh, vous donne le tawfiq pour que vous puissiez continuer dans vos études et que vous réussissez. Et au moins, vous allez revenir parmi nous pour nous donner un peu de dars et de votre expérience, vous allez partager avec nous. En tout cas, Marie Douat. Merci beaucoup, Nadir Bhai. Khuda Hafiz. كل ساعة والي وحافظا وقائدا وناصرا وداللا وعينا मस्जिदों में खौफ का समा, आग हर तरफ धुआं, खाना-ए खुदा अब है बेअज़म, हर तरफ उदासियां मस्जिदें हैं नौहा या इमाम कुल साअत वालियों वहाफिज़ा वकाइदा वनासिरा वदालिला वअयना दिल बेखता लोग हो गए, कदम कदम कितने हादसे